ओके, सो यहाँ से करना था। देखो, ड्यू टू द एक्सटेंसिव राइस कल्टिवेशन, देखो चावल के कल्टिवेशन में ना सम रीजन्स में भी कंट्रीब्यूटिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। यस, डेफिनेटली। क्यों? बिकॉज राइस कल्टिवेशन में देयर एग्जिस्ट्स एनारोबिक कंडीशंस को पैदा करना पड़ता है, एंड विच रिजल्ट्स इन द एमिशन ऑफ मीथेन। ठीक है। एंड व्हेन नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड, नाइट्रस ऑक्साइड इज एमिटेड फ्रॉम द सॉइल विच एक्ट्स एज अ पोल्यूटेंट। ठीक है। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग द मेंबर्स ऑफ द एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप। अब ये देख लेना, कोई एक संगठन होगा इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप, they consume the world's 60% energy and they produce the 60% of world's greenhouse gases. इस लिहाज से आप इसको एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप को रिमेंबर कर सकते हैं, एंड दे ऑल्सो इंटेंड टू सपोर्ट द क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। देन द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर विच मॉनिटर्स द एमिशन reduction pledges of different countries is a database created by coalition of research organizations. Again, low profile body hai, you can skip that. The following statements are correct. The Climate Group is an international non-profit organization that drives climate action by building large networks and runs them. Okay, then EP 100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. Some Indian companies are members of the EP 100. So this is okay. So this is rather important. EP 100. EP 100 एक्चुअली जैसे फॉर्चून 100 होता है, फॉर्चून 50, उसी तरह से EP 100 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ environmentally conscious and efficient companies and corporations that are committed to innovation in energy efficiency as well as competitiveness regarding the reduction in emission goals. And some of the Indian corporations are also members of EP 100. Also, there are two groups that I studied right now. एक का नाम था एशिया पैसिफिक पार्टनरशिप। ऐसे मोटा मोटा याद रख सकते हो कि दे कंज्यूम, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, they consume 60% of the world's energy and they also produce 60% of the world's emissions, greenhouse gases, and they support the Kyoto Protocol as well. इसके बाद हमने ये क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर और द क्लाइमेट ग्रुप, ये दो लो प्रोफाइल बॉडीज़ हैं, तो इनको चाहो तो स्किप कर सकते हो, बट द क्लाइमेट ग्रुप को बस याद रखो, इट इज़ एन NGO। ठीक है। It is a non-profit organization that drives climate action by building large networks and runs them. So the climate group is not a governmental body, it is a non-profit organization. Similarly, the climate action tracker, which monitors the emission reduction pledges of different countries, is a database created by coalition of research organization. Okay, moving on. Now, ozone layer पे कहाँ है? Basically stratosphere में the maximum concentration of ozone is in the stratosphere, and most atmospheric ozone is concentrated in the stratosphere above the earth's surface, that is 18 से 15 किलोमीटर्स के आसपास। 18 से अगर हम पूरा उसकी बात करें, स्ट्रेटोस्फेयर की बात करें, उसके लिमिट्स की बात करें, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम 18 किलोमीटर्स एंड गोज अप टिल द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर्स। बट अगर सिर्फ ओजोन की बात करें, सो इट एग्जिस्ट्स बिटवीन 15 to 30 किलोमीटर्स। सो largely it lies in the stratosphere. ठीक है। The lowest layer of the atmosphere is troposphere, and the following is not true about the chlorofluorocarbon. It is not responsible for the greenhouse effect. Not true पूछा है। ठीक है। Then this is responsible for ozone hole, that is CFC. The radiation that is absorbed by the ozone present in the atmosphere, that is ultraviolet. अब इन्हीं को ब्लॉक कर देता है अगर ओजोन सही है तो। अगर ओजोन में छेद हो गया तब तो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे पहुंच जाएगी और फिर वो नुकसान करेगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ओजोन। सो ओजोन रोज़ बनता है और रोज़ टूटता है, और उसके बनने में भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का रोल है। सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सनलाइट कॉजेज द रिएक्शन दैट प्रोड्यूसेस ओजोन। बट अगर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स अगर ऊपर चले जाएंगे तो ऑक्सीजन जो है क्लोराइड आयन से कंपाउंड बना लेगा इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स विद देमसेल्व्स। तो जब ऑक्सीजन मिलके ओजोन बना देते हैं, एंड दैट ऑल्सो रिक्वायर्स UV रेडिएशन। और लेकिन अगर CFC हो जाएगा तो ऑक्सीजन से ना जुड़ के CFC से जुड़ने लगेगा, और इन दैट केस ओजोन नहीं बन पाएगा। देन ओजोन प्रोटेक्ट्स द बायोस्फीयर फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज। देन ozone layer in atmosphere provides safety to life on Earth from ultraviolet radiation, and ozone layer is useful to humanity because it prevents the sun's ultraviolet rays from reaching the Earth. The ozone layer of atmosphere absorbs ultraviolet rays.
Harmful ultraviolet radiation coming from the sun can cause skin cancer, and the International Day for Preservation of Ozone Layer is observed on 16th of September. The ozone hole is caused by chlorofluorocarbons, and the following gas is responsible for the decrement in ozone layer. Again, CFC, the pollutants causing maximum damage to the ozone layer, that is chlorofluorocarbons, and the following is not responsible for depletion of ozone. The following is not responsible for the depletion of ozone. The following is not responsible for the depletion of ozone. That is methyl chloroform used as a solvent. ठीक है. The following is not responsible for the depletion of ozone. The following is not responsible for the depletion of ozone. Depletion of ozone के लिए एक second. The following is not responsible for the depletion of ozone. Methyl chloroform used as a solvent. So methyl chloroform is slightly less harmful. इस statement से ये पता चल रहा है. So methyl chloroform does not cause ozone depletion. Methyl chloroform, remember that. Among methane, carbon monoxide and water vapors, the following greenhouse gas does not cause ozone depletion. So carbon monoxide does not cause ozone depletion. That is, ये तो हमको पता है. Formation of the ozone hole is maximum over the Antarctica. तो सदर्न हेमिस्फेयर में जो साउथ पोल पे है अंटार्कटिका, वहाँ पे ओजोन होल सबसे ज़्यादा है. Montreal Protocol is related to the protection of ozone layer, and among the CFC, white line and water pollution and agriculture, Montreal Protocol is related to CFC. ये कैसे सवाल था? In stratosphere, the level of ozone is naturally regulated by एक second. In stratosphere, the level of ozone is naturally regulated by nitrogen dioxide. Again, a tricky question. Let me ask. In a stratosphere, the level of ozone is naturally regulated by. The level of ozone is the stratosphere. The level of ozone in the stratosphere is naturally regulated by a balance between the production and destruction of ozone molecules. How do we? So, एक second. The level of ozone is naturally regulated by NO2. Yes, in a stratosphere, level of ozone is naturally regulated by ozone concentration in the atmosphere vary naturally with sunspots. इसका कोई सही रीज़न नहीं मिल पा रहा है. तो अभी तक के लिए 2 फैक्ट्स हमको थोड़ा सा अजीब लगे थे, उसको हम मार्क कर ले रहे हैं. एक तो ये कि मिथाइल क्लोरोफॉर्म डज नॉट कॉज ओजोन डिप्लीशन, सो आई विल मार्क दैट. And the second thing is that in a stratosphere, the level of ozone is naturally regulated by nitrogen dioxide. ठीक है. So ये 2 चीज़ें हैं. Then chlorofluorocarbons known as ozone depleting substances are used in the production of plastic foams and cleaning certain electronic components as pressurizing agents in aerosol cans. ठीक है. And the following substances are ozone depleting. CFC है. Halons भी है. What is halons? And carbon tetrachloride. CCl4. What is halon? अच्छा, halons. Okay, so halons cause ozone depletion. Halons cause ozone depletion. Yes, halons are powerful ozone depleting substances along with chlorofluorocarbons as well as carbon tetrachloride. Alright. Now, CFC known as ozone depleting substances are used in the production of plastic foams, in cleaning certain electronic components as pressurizing agents in the aerosol cans. ठीक है. Then we have the formation of the ozone hole in the Antarctic region has been a cause of concern. This would be the reason for the formation of this hole. Presence of prominent polar front and the stratospheric clouds and inflow of chlorofluorocarbons. तो ये सारे reasons हैं कि Antarctic region में ज़्यादा ओजोन होल क्यों हो रहा है. उसमें stratospheric clouds भी एक reason है. Stratospheric clouds होंगे तो और साथ में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के पोल्यूटेंट्स के रूप में मौजूद होंगे, तो ये सारे कारण बन सकते हैं. एंड ऑल्सो पोलार फ्रंट भी होगा. तो ये 3 कारण हैं. इसको भी मैं एक अच्छे क्वेश्चन में काउंट करूँगा. सो आई विल मार्क दैट. सो presence of a prominent या strong polar front along with pollutants such as chlorofluorocarbons, and last but not the least, presence of stratospheric clouds in the southern pole. Stratospheric clouds अगर होते हैं तो ओजोन डिप्लीशन या ओजोन होल ज़्यादा बढ़ जाता है. ठीक है. स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कॉज ओजोन डिप्लीशन एंड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कंट्रीब्यूट टू ओजोन डिप्लीशन इन 2 ways: converting chlorine and removing nitrogen compounds. Remove nitrogen compounds that moderate the destructive impact of chlorine. So actually ये जो previous सवाल था
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में लिखा था कि द लेवल ऑफ ओजोन इज़ नेचुरली रेगुलेटेड बाय नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स में बाय डिफ़ॉल्ट HNO3 के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है. और वो जब हो जाते हैं वो रेगुलेट करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग, द रेट ऑफ ओजोन डिप्लीशन. अब पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स कंट्रीब्यूट टू द ओजोन डिप्लीशन इन 2 ways. Polar stratospheric clouds form in the polar stratosphere during the winter when the temperatures are cold enough, and they play a key role in the formation of the ozone hole in the Antarctic as well as Arctic. तो दोनों जगहों पे ये होता है. तो मोटा मोटा डायरेक्ट रिलेशन इस्टेब्लिश करना है कि पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स है तो ओजोन होल प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है. और एक पॉइंट ये था कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स दे रेगुलेट द ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर. और तीसरी चीज़ ये थी क्या कि मिथाइल क्लोरोफॉर्म डज नॉट कॉज ओजोन डिप्लीशन. फिर यह है कि अमंग अमोनिया, मैफ्रॉन, methane and acetylene, this gas is filled in refrigerators. So maffron is a gas, it's just like freon, similar to freon. So maffron is also a gas that is filled in refrigerators. Among ammonia, maffron, methane and acetylene, this gas is filled in refrigerators. So maffron is a gas that is filled in refrigerators. Okay, then due to their extensive rice cultivation, some regions may contribute. Again, अब ये पेज रिपीट हो गया है, तो I'll move ahead. So the following team of scientists first discovered ozone hole over Antarctica. So it was a British team. It was a British team first which discovered. It was first British team that discovered the ozone hole over the Antarctica. That is जो south में होता है. The following had discovered ozone hole over Tibetan Plateau in 2005. So इनका नाम याद रखो, G.W. Kent and surname इनका है Moore, Moore. G.W. Kent Moore, this was the person who actually discovered the ozone hole above the Tibetan Plateau. Year is not important. Ozone is essential for biotic life. Yes, and reason is the ozone layer protects the Earth's surface from high energy radiation. That is also correct, and it's correctly explaining the assertion. The following is associated with the issue of control and phasing out of the use of ozone depleting substances. Montreal Protocol. The following statements with reference to Uttar Pradesh are correct. Forests constitute about 6.15% of the total geographical area of the state. Is that true? Every district of the state have some forest land. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट है जिसमें ज़ीरो फॉरेस्ट है, ऐसा तो नहीं है. So let me ask that, confirm that. Forest constitute about what percent of the total geographical area of the Uttar Pradesh? So what percent of UP? So that is the forest area in the Uttar Pradesh is about 6.88%. So अब ये थोड़ा बढ़ गया है, but you can remember that it is somewhere between 6.5 to 7%, इसी के बीच में है. And also that every district of UP has some forest land. So if you confirm, no, not every district in Uttar Pradesh has some forest land. Jaunpur, Ghazipur and Balia, these districts do not have any forest land. Sant Ravidas Nagar, similarly, this district has the least forest area in Uttar Pradesh with only 3.12 square kilometers of forest cover. Alright, so यहाँ पे तो फिर गलत लिखा है. Every district of the state has some forest land. So you have to remember that the districts like Jaunpur, Ghazipur, Balia, they have no forest land. So you can write here, Jaunpur, Ghazipur and Balia have no forest land. They have no forest land, ठीक है. So ये जो second statement है, that is wrong. Then the percentage of forest cover concerning the total geographical area is highest. देखो प्रतिशत वाइज अगर देखा जाए तो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा है फॉरेस्ट कवर प्रतिशत में? मिज़ोरम में है. And the largest percentage of forest area, Mizoram. As part of the new forest inventory design implemented in 2016, the revisit time has been reduced from 20 years to 5 years. ये क्या है? New forest inventory design. New forest inventory design. What is that? So the new design for the National Forest Inventory in India involves the number of changes to the previous sampling approach. Okay, so the revisit time क्या होता है? What is revisit time? So the revisit time for the new National Forest Inventory design in the 5 years is 5 years for the forest inventory and 10 years for the TOF inventory. This is the reduction from the previous design which had a revisit time of 20 years. I don't know what is that. So what is forest inventory data? It is a systematic collection of data and forest information for assessment or analysis. An estimate of the value
and possible uses of timber is an important part of the broader information required to sustain ecosystems. Forest inventory data are the primary information source for forest management. तो अब इसमें revisit time इस तरह से समझ सकते हो कि you'll have to like reassess and reevaluate ground level पे जाके field study करके फिर से नापना जोतना सब कुछ करना. So earlier this revisiting exercise was done after a period of 20 years. Now it has to be done after a period of 5 years. So as part of the new forest inventory design implemented in 2016, the revisit time has been reduced from 20 years to 5 years. National Mission for Green India has been initiated in the following states by Government of India with the aim to improve the density of existing forests. National Mission for Green India has been initiated in the following states. तो अब देखो झारखंड में तो ठीक है ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ठीक है. दैट इज़ व्हाट नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया हैज़ बीन इनिशिएटेड इन द फॉलोइंग स्टेट्स इज़. तो ये पूछ सकते हो कि इज़ नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया इज़ इम्प्लीमेंटेड in all the states. So yes, the national mission for green India is implemented in many states and one union territory of India including Jammu and Kashmir. वही ठीक है. तो अब ये सारे में ही किया जा रहा है नहीं many states में किया जा रहा है not सारे. all right, so how many national ठीक है तो ये ठीक है. तो this question was not making any sense. ठीक है छोड़ो. The following is not the impact of deforestation in India. Urbanization is not an impact of deforestation. In India, the state with the largest area under very dense forest, so that is Arunachal Pradesh. अब ये absolute figure के terms में पूछ रहा है. The largest area in absolute number, largest area under dense forest, तो that is Arunachal Pradesh. लेकिन percent wise पूछा जाए percent of which state का percent land is greatest covered by forest, so that is Mizoram. The following statement is not correct. Nagaland is the most forest covered state of India. नहीं absolute में अरुणाचल है और प्रतिशत में मिजोरम है. तो you can confirm that. Which is the most forest covered state in India? So it is MP has the largest forest cover in India by area, while Mizoram has the highest percentage of forest cover. तो ये जो तुमने देखा था अरुणाचल प्रदेश, मे बी आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस ये अरुणाचल होगा, बट पूरे इंडिया का देखा जाए तो MP हैज़ द लार्जेस्ट ऑब्सोल्यूट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर. ठीक है तो ये हो गया. नाउ अमंग ईस्ट डेक्कन, नॉर्दर्न प्लेन्स, वेस्ट कोस्ट एंड ईस्ट कोस्ट ट्री कवर इज़ मैक्सिमम इन. ये ईस्ट डेक्कन में देखो ये कुछ रीजन्स बाइफरकेट कर दिया है. अब जैसे ईस्ट डेक्कन है तो ये ईस्ट डेक्कन हो गया एक रीजन, फिर नॉर्दर्न प्लेन्स हो गया, यहाँ तो फॉरेस्ट कम होगा. वेस्ट कोस्ट यहाँ फॉरेस्ट है ठीक ठाक है, और ईस्ट कोस्ट. तो अब इन 4 सब रीजन्स ऑफ इंडिया में कहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है? तो ईस्ट डेक्कन नामक रीजन में है. ठीक है. फिर ये असर्शन है फॉरेस्ट आर रिन्यूएबल रिसोर्स. हाँ नहीं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है फॉरेस्ट. दे एनहांस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट. तो एक सेकेंड, फॉरेस्ट्स आर अ रिन्यूएबल सोर्स, ऐसा कैसे हो सकता है? दे एनहांस द क्वालिटी ऑफ एनवायरनमेंट, ये तो सही है. एक सेकेंड, ये भी क्वेश्चन छोड़ो, अजीब सा है. नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट एग्जिस्ट इन द रीजन and can also be used in the future. The development of an actual natural resource depends upon the technology and cost of production. ये भी काफ़ी अजीब सा सवाल है, छोड़ो. According to the National Remote Sensing Agency NRSA, among Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim and Himachal Pradesh, the following state has its maximum area covered by forest. तो ये अरुणाचल में है. ठीक है. तो वो प्रतिशत तो पूछा नहीं आता. तो अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में देखा जाए तो अरुणाचल ऑब्सोल्यूट नंबर में, ऑब्सोल्यूट एरिया में सबसे ज़्यादा एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर है. प्रतिशत में देखा जाए तो फिर मिजोरम है, और पूरे इंडिया का देखा जाए ऑब्सोल्यूट एरिया में तो फिर MP है. द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट. द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम एम्स एट ब्रिंगिंग 1/3 ऑफ द एरिया ऑफ इंडिया अंडर द ट्री फॉरेस्ट कवर. ठीक है, ये तो हमको पता था. तो अब ये फिर से पेज रिपीट हो रहा है, अजीब बात है. एनीवे, सो ये जो मिशन का नाम है द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम, ये इसका नाम इंपॉर्टेंट है, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम. ठीक है, अब अगले में देखते हैं वीडियो में.